डियर व्यूअर्स, वेलकम टू रियल्टर्स कैफ़े विद असफर ताहिर। कैसे हैं आप? कैसे आपके आजकल दिन गुजर रहे हैं? काफ़ी गर्मी चल रही है, ऐसे हीट वेव है आजकल, और नॉट ओनली इन टोरंटो, ऑल अक्रॉस कैनेडा काफ़ी गर्मी है। और आई वाज टॉकिंग टू अ फ्रेंड ऑफ माइन इन कैलगरी, अल्बर्टा, एंड ही सेड कि जी वहाँ भी बहुत गर्मी चल रही है। तो आई वाज सरप्राइज्ड कि कैनेडा, अल्बर्टा इज़ अ कोल्ड प्रोविंस, कोल्ड स्टेट, वहाँ भी। तो आई थिंक कि पूरा ऑल अक्रॉस नॉर्थ अमेरिका ये हीट वेव चल रही है। इवन साउथ ऑफ द बॉर्डर यूनाइटेड स्टेट्स, वहाँ भी बहुत इस वक्त गर्मी पड़ रही है। तो इन्जॉय कीजिए, गर्मी बड़ी है, समर्स जो हैं बड़े शॉर्ट लिव्ड है यहाँ पे। तो हीट को, सन को इन्जॉय कीजिए एज लॉन्ग एज इट लास्ट। एंड वैसे ही आज तो बारिश भी बहुत हो रही थी, अभी भी चल रही है। रेन स्टॉर्म था। आई वाज आउट ऑफ टोरंटो, मैं गया हुआ था एक मीटिंग पे। तो ऑन द हाईवे आई मीन विजिबिलिटी वाज ऑलमोस्ट ज़ीरो। तो काफ़ी हैवी रेनफॉल थी। तो रेन को भी इंजॉय कीजिए, सन हीट को भी इंजॉय कीजिए, हर चीज़ को इंजॉय करना चाहिए। तो लीजिए, प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। डियर व्यूअर्स, आज हमारे स्टूडियो में वी हैव टू गेस्ट्स इन आवर स्टूडियो। एक का ताल्लुक मॉर्गेज इंडस्ट्री से है, और जो सेकंड हमारी गेस्ट हैं वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री से उनका ताल्लुक है। तो आइए आपको उनसे मिलवाते हैं। तो हमारी पहली फ्रेंड हैं जी नीलम सडोफ। वेलकम टू रियल्टर्स कैफे नीलम। Thank you, Afzal ji. How are you? आई एम ओके, गुड, थैंक्स। तो आपको बताना चलूँ कि नीलम जो हैं वो शी इज़ वर्किंग विद सेंटम इंडिगो मॉर्गेजेस, और काफ़ी इनका मॉर्गेजेस का और इस इंडस्ट्री का काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो हमसे आगे चल के बात करेंगे कि क्या किस तरफ ये मॉर्गेजेस और ये फाइनेंशियल्स किस तरफ जा रहे हैं, इनसे बात करते हैं। इनके साथ बैठी हैं जनाब हमारी बड़ी अच्छी और प्यारी सी गेस्ट सुखी कौर। Welcome to Realtors Cafe, Suki. Thank you, Aswarji. Good evening, all the viewers. Thank you, Aswarji, for having me here today. A pleasure is ours. तो सुखी जो है, she is a realtor, he is a real estate agent with City Heights Realty. So चलें प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। बस हमारे, जैसे मैंने बताया कि हमारे प्रोग्राम का जो पर्पज़ है, ऑब्जेक्टिव ये है कि हम डिफरेंट प्रोफेशनल्स को लेकर आते हैं इस प्रोग्राम में, और वो प्राइमरीली रियल एस्टेट के बारे में, मॉर्गेज और फाइनेंशियल इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं कि क्या ये इस वक्त हो रहा है। बिकॉज दिस इज़ बोथ, ये आज हमारी रियल एस्टेट जो चल रही है बड़ी हॉट है मार्केट, स्टीमिंग। और बात करते हैं पहले हम नीलम से। तो नीलम, हमें बताइए कि आप इन्वॉल्व हैं मॉर्गेजेस में और काफ़ी एक्टिवली, और आप काम कर रहे हैं। तो हमें बताइए कि मॉर्गेजेस का क्या इस वक्त सिचुएशन है। इस वक्त रेट्स तो काफ़ी इस वक्त हिस्टोरिकली लो हैं, और जैसे कि बैंक ऑफ कैनेडा ने कहा है कि अभी दे हैव नो प्लान्स टू इंक्रीज द रेट्स। तो जिसका ऑब्वियसली इम्पैक्ट जो है वो रियल एस्टेट मार्केट पे भी आता है। ऑब्वियसली रेट्स कम है तो पीपल वुड लाइक टू बाय मोर एंड मोर पीपल वुड लाइक टू बाय। तो ज़रा बताइए हमें रियल एस्टेट, अपना मॉर्गेज के बारे में। Just like the market, like just the weather, जैसे weather hot है, ऐसे market भी बहुत hot है। So market स्पेशली मॉर्गेज और रियल एस्टेट में कभी भी स्लो नहीं होती। आपने चाहे घर आज से 35 साल पहले लेना था और आज लेना और कल लेना है, इट वुड नेवर बी स्लो। इट ऑलवेज इन डिमांड। पीपल एक्टिवली, दे एज द न्यू जनरेशन कम्स and they are better than the older generations in that respect. They have a more independence nature. They would like to have their own independence with their own properties, with their own mind. It is very hot, but since the rates are so low, historically low, it's an advantage for the first time buyers, especially for young generation. I know it's hard to have their houses for low prices, but even if they go for condo houses, even if they go for townhouses, the smallest, and prices is good for them. They can afford, they earn good. Our new generation क्वालिफिकेशन में कोई मसला आ रहा है? It has a change. पंजाबी में yes. कंफर्टेबल हो तो पंजाबी बोलो। That's okay. It was a change. The change was from 4.79 stress rate to it has gone to 5.25. That's what I was coming to it. Stress test, I mean, it was introduced, kicked in from 1st of June. Will it have any impact on mortgage qualification? It did and it didn't, in a sense. It didn't impact so much, but there was a people who used to qualify. There are two types of rate. One is qualifying rates and one is the term rates. Qualifying rates is like a 4.79 when they used to be. It used to be a...
they actually did it now 5.25. 5.25. Right, 5.25. It's not a major impact. People who used to be qualifying for 100,000, say for instance, now they're qualifying for 108. जिस किसी ने मकान लेना है 5 लाख का, उसके लिए 100,000 की इनकम इनफ होती थी, पर अभी what they need is a 108. ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਗੇਜ ਜਾਂ ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ decrease karo, they go for a lower valued property या फिर अपनी already income है उन्हें increase करो. That's it. It didn't majorly impact, but yes, people still qualifying for that. But government of Canada, they have stepped in ताकि ਜਿਹੜੀਆਂ overbidding prices, overbidding prices, wars, this and that. So just to stop that, that's what they took a step in. That's why they just increased that. Okay, Sukhi, you tell me. I mean, as Neelam said, ये जो किया है इन्होंने stress test को reintroduced or re-kick in, उससे कोई इम्पैक्ट आएगा ये बिडिंग वॉर के ऊपर? बिडिंग वॉर अभी तक चल रही है वैसे जी, अभी भी सेलर्स मार्केट है, बिडिंग वॉर स्टिल देयर. एवरी प्रॉपर्टी, कोई भी आप प्रॉपर्टी देख ली मार्केट में, उस पे 3, 5, 10 ऑफर्स के कम ऑफर आते ही नहीं है. एवरेज, हाँ बिल्कुल. Any house 8 to 10, yeah, they put, because what sellers are doing, which is the trend these days, they put their house in the market for lower price, कम price पे लगा देते हैं, फिर उस पर there's a bidding, because then they attract more people to put offers on the property. So that's how bidding wars right now, it's not stopping, and I don't see it stopping anytime soon. Yeah, because that's what I noticed, because we are not going anywhere, and exactly. they were trying to deter or to control the multiple offer situation, but it's still there. Because there's one property, I was planning to put up an offer on in Mississauga, and I got the message that they have received 9 offers. Exactly. An offer presentation was about an hour ago. Yes. So I spoke with my buyer. He said there's no point. It's going to go, way over asking. Yeah. So इन चीज़ों को अब जैसे कि नीलम कह रही थी कि जी ये इससे कुछ फर्क पड़ेगा, but I don't see any. Honestly, I don't see it. What I will say in future, as the immigration's gonna open, because last year and a half there's no immigrants who's been coming in the country. जैसे जैसे उन्होंने immigration open करनी है, more immigrant people are gonna come here, and then it's gonna be even worse. More buyers आएंगे, sellers की market hot ही होती जाएगी. That's why I say demand and supply, because a lot of people right now, I think it's over close to 900,000 immigrants. Exactly. Yes. Approved immigrants just waiting to land here. Yes. Which includes 2020 and 2021. Exactly. And these are those people who applied through the Canadian immigration process. Right. एंड वहाँ से आ रहे हैं कुछ अपने पॉइंट सिस्टम के ऊपर. उसके अलावा द पीपल कमिंग ऑन वर्क परमिट्स एंड द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, वो तो उसके अलावा हैं. जी. तो आप देखें नंबर ऑफ पीपल आर कमिंग इनटू दिस कंट्री and we don't have enough housing. Exactly. So the prices, though, I don't see they're going to stop anywhere. Market's going to keep on booming. Yeah, market is going to boom in a couple of years, especially with these immigrants. Between 1 million to 1.5 million people will be migrating. Yes, because they have those numbers for the next 2 years, 2022, 2023. Exactly. Another million, immigrants will be coming to this country. Yes. So where are we going to accommodate them? This is, people now say, oh, houses are expensive, or even the rents are so expensive. You wait a couple of years, even the rent's going to go so high. The students going to come where they're going to live. The market will be full. But the majority of the people, I know, they are moving out of GTA now. They're going to other parts of the province. Yeah, and they're making those provinces expensive as well. Yes. Because you go to other cities, it's insane over there. Yeah. Even they have all this multiple offers and bidding wars going on. Go to Kitchener, Cambridge, Waterloo, Brantford, Paris, and even Woodstock, London. Windsor starting up. Yes. वहाँ पर multiple offers चल रही हैं. Even Kitchener, London, Windsor, Sarnia, जो like इतनी far है यहाँ से. Everywhere the prices are going booming. People are what are they doing? They're buying in a small properties there, and they know in a couple of years the price is going to go so high. They will build the equity in that houses. It is a mortgage market, especially at this time. The interest rates are historically low. Take an advantage of that. People who
especially the first time buyers, they should buy it now, even on pre-construction's home. Once they buy that, it's a double dip profit. Lowest interest in the market, and once they sell it, they can sell it on high rates, and the equity will be built, so they will be making double the profit. Okay, I mean the people who come to you for who apply for mortgages. Correct. तो क्या आजकल नॉर्मली कितनी मिनिमम डाउन पेमेंट के ऊपर मॉर्गेज हो जाती है? You can go as low as 5%. I tell you the truth. 5% पे हो रही है आजकल? Yes. एक ज़माने में तो थी, I mean I'm talking about you many years ago when property prices were not that high. Yeah. But अब भी 5% पे क्वालिफाई Yeah, कर लेते हैं? depend upon your situation. How is your credit score? How is your income? How much is the down payment? It depends upon a case to case. You can't just say, okay, everybody can do 5%. No, it doesn't happen. It does happen. You have a good income, you have a good down payment. If you don't have a good down payment, at least good credit score, right? Maintain your credit score. If you know you're going to buy the house, you should maintain your credit score always. Credit score is very important, you know. Very I mean, in good standing होना चाहिए, otherwise तो there is no life in Canada. बिल्कुल. Without credit score, you're nothing. You can't buy even a car. If your credit score is bad, you cannot even, I mean, lease or finance Exactly. anything. Even can't even rent a For property. renting, yes. रेंटिंग के लिए भी आप जाते हैं तो लैंडलॉर्ड सबसे पहले कहता है जी कि क्रेडिट Credit रिपोर्ट दीजिए, और Yeah. क्रेडिट रिपोर्ट अगर ख़राब है तो उस पे वो ऑल्दो कि एम्प्लॉयमेंट अगर अच्छी भी है उसकी एम्प्लॉयमेंट इनकम, बट इवन देन क्रेडिट पे काफ़ी एम्फेसिस है यहाँ पे लोगों का. yes. तो अब आप मुझे ये बताइए कि इस वक्त रेट्स हो काफ़ी, आपकी कंपनी क्या रेट्स ऑफर कर रही है आजकल? इफ़ आई कम टू यू Yep. फॉर अ प्रॉपर्टी, I can offer you as low as 0.99. Variable. 0.99. Variable for 1 year, 1.20 variable for 3 years, and if you're looking for fixed rates, 1.54 for 3 years and 1.89 for 5 years with the cashback option from 750 to 2,500, depending again upon your situation. It's for conventional mortgages only, not for high ratio. So conventional means when it's a Minimum 20% and down, not up, 20 and down. उनके लिए conventional is mortgage that. So उनके लिए rates, these are best rates, and if you do qualify for that, you have to be A-class customer. Your credit score, your income, your this and that, so everything. So it's situation to situation, but I can go as low as, I can get you those rates as low as Are you sure? 100%. Oh my God. दोस्तों आप सुन रहे हैं, यानी कि इतने लो रेट पे आपको अगर मॉर्गेज मिल रही है, Yes. फिर तो आई थिंक डोंट वेट, जस्ट कॉल नीलम राइट नाउ. आप अपना नंबर बताएंगे? 647-739-8710. नीलम सदोव को आप फौरन कॉल कीजिए और अपनी गेट योर मॉर्गेज डन एट दीज रेट्स. आई मीन आई एम सरप्राइज्ड. Oh my I God. would like to add something on that. If you're stuck, your closing is next week, it's not happening because of A reason, B reason, any reason. Yeah, it happens last minute, कुछ ना कुछ Last something minute. comes up or Something comes up, people say, okay, you know what, mortgage agent कहता है कि आपकी mortgage नहीं हो रही. Call the B lender, call the private lender, this and that, whatever the excuses are coming. If you are stuck, within a week, I'll get you 3.99 if you qualify for that private lender rate. private lender rate. Yes, 3.99. 3.99. No, it's a good rate. I It's mean, very good private rate. lenders rates, I remember a few months ago, even last year or last couple of Yeah. years, they were very high. They used to be at one point, if you do remember, in year 2016 and 17, they used to be 16%, 13%, Yes. those rates. People used to afford that. But now we are so used to with the quality of life, with the low interest rates and good prices and all that, especially in Canada. Yeah, it's a luxury life if you have a lowest interest rate and you can. That's right, that's right. But I'll get you 3.99 again if you have a certain criteria, which is if you have 25% down, you have a good credit score which is above 750, and you're stuck. Neelam is here. All right, Neelam is here. आप नंबर बताइए. 647-739-8710. लो जी, हमने आपको नीलम द मैजिशियन आपको दे दिए. आप किसी किस्म की मॉर्गेज है, कोई प्रॉब्लम है, आप राइट वे कॉल नीलम एंड गेट इट डन. अच्छा, तो सुखी, अब मुझे आप बताइए कि इस वक्त आप क्योंकि रियल्टर हैं और रियल एस्टेट में काफ़ी एक्टिव हैं आप,
जी। और काफ़ी का आप किन एरियाज को ज़्यादा कवर कर रही हैं? Well, I work all over Ontario, so it doesn't matter whether it's Brampton, Cambridge, Kitchener, doesn't matter, Waterloo. So I cover all the areas, all over Ontario, like I said. So आपने कहीं पर भी घर लेना है और sell करना है, you can give me a call at 647-408-7066. अपने sellers को मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर आप घर sell करने के लिए सोच रहे हैं, I will list your house for $1,000 only. Oh my God! $1,000 में मैं आपका घर लिस्ट करके within 2 weeks I will sell it for sure. I mean, you know, I know It's market a is great super deal, hard. my friends, dear viewers. अब देखिए अब आपको और क्या चाहिए, बच्चे की जान लेंगे क्या? अच्छा, तो ये मुझे बताइए, just tell me, right, as we just mentioned that the real estate market is very hot, it's steaming. Right. Do you think that the same trend's gonna continue for the next few years? Like I've said before, I personally think it's gonna stay the same because I know I just mentioned as many immigrants are gonna come, they're gonna उनको घर चाहिए, रहने के लिए कोई जगह चाहिए, चाहे वो रेंटर्स हैं, चाहे वो घर बाय करना चाहते हैं, मार्केट में प्राइसेस हायर ही होने हैं बिकॉज अगर वहाँ पर कुछ अवेलेबल नहीं है, they don't have option but to pay for what the seller is looking for, right? So I mean for my buyers I would say अगर आप घर खरीदना चाहते हैं अभी भी सही वक्त है, आप अभी घर मुझे कॉल कीजिए, I will help you to find the lowest and nicest house in the town whichever you're looking for. I'll help you for that and I'll make sure Neelam gets your mortgage done. All right, see, it's a duo. I mean, one window operation. I mean, I mean, Suki will find you a property, and Neelam will get the mortgage done. Absolutely. और जो दोस्त सोच रहे हैं, I mean, I know so many people. I mean, my friends and my acquaintances, they've been thinking of buying the real estate or property or house for themselves. For it's been years now. और वो इसी चक्कर में है जी कि मार्केट जो है वो डाउन जाएगी, मार्केट करेक्ट होगी, इसने ना करेक्ट होना जी, थोड़ी बहुत ठीक है, प्राइसेस स्टेबलाइज हो जाएंगी, थोड़ा सा प्लेटो आ जाएगा, बट ये जो राइजिंग ट्रेंड है ये रहेगा बिकॉज कैनेडियन मार्केट हैज़ डिफरेंट डायनामिक्स, इसके फंडामेंटल्स आर डिफरेंट. तो इसलिए यहाँ पर जो सोच रहे हैं प्लीज़ स्टॉप थिंकिंग फर्दर, एक्ट कीजिए आप. अभी ये एक्शन का टाइम है, इसको फर्दर आप इसको लेट मत कीजिए, डोंट डिले इट. Just act right away and get yourself a property, and we have the mortgage specialist. It's always. Real estate is the best thing to invest your money. Always. It is. I mean, all over the world. I mean, not Yeah. only in Canada. Canada, it's a safer investment. It's a very Yes. safe investment, I tell you. Yeah. इसमें आपकी प्रॉपर्टी हमने ले ली. अगर थोड़ी सी प्राइस ऊपर नीचे होती है तो आप just hold on to it. और नीचे प्राइस नहीं आती. वही है कि प्रॉफिट में आपको थोड़ा सा जो है वो घाटा लेना पड़ेगा फॉर द टाइम बीइंग, वो लेकिन फिर मार्केट, क्योंकि जैसे आई टोल्ड यू कि कनाडा इज एन इमिग्रेंट बेस्ड इकोनॉमी. कैनेडियन इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन इमिग्रेंट्स प्राइमरीली. तो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, दे नीड हाउसिंग, दे नीड अ प्लेस टू स्टे. तो यहाँ पर ये ट्रेंड जो है वो हॉट ही रहेगा, इसलिए डोंट वेट, एक्ट इमीडिएटली. अच्छा, मुझे ये बताइए नीलम जी, मेरे पास डाउन पेमेंट नहीं है, तो मुझे मॉर्गेज मिल सकती है, घर मिल सकता है? It's hard without down payment. You have to have some percentage in the house. Okay. अच्छा चलें, I have a house. Over a period of time, I have built up some equity in the property. Right. Can I take that equity out and put down towards? Absolutely, that's a very good question. People who have houses from last few years especially, and the prices has gone skyrocketing, you do have an equity in your house, take it out, invest it in somewhere else. You can buy an investment house, you can buy a condo house or pre-construction house. Especially pre-construction houses, you need a little deposit which you can take an equity out, and they're going to get built in a couple of years, maybe next year, maybe a year after. In that period your situation change. You already have given a deposit, but you will accumulate more money while you're working or from your house, wherever, but then you can invest it on that house. By the time the house gonna get built, the equity gonna go high. The house you bought it for 500,000, say for instance, by the time you're gonna close it, it will be 650, right?
and once you're going to rent it, the rent is also going to be high. I personally myself have invested in Gulf area. I bought, Gulf is very odd, yeah, I purchased those houses. We purchased in around 500,000 range. They are touching million, and within Yeah. within 3-4 Must be, years, must be. Yeah. right? So just take an equity out and invest it there, make your money, be rich. Why not? Yeah. That's I think probably the best way. Making money. Making money and getting rich. And don't repent. You normally say, oh my God, everybody say, I wish last year had we bought the house, it would have been good, but the prices were so low. If yesterday was the good day, today is the other best day to buy it. So don't miss an opportunity. The Don't rates miss are, an opportunity. आपने सुना है नीलम का कह रही है don't miss an opportunity, just act upon it. Yes. ज़्यादा सोचना छोड़ दीजिए, और ये साथ में जो आपने 4-5 एडवाइजर्स बिठाए हुए ना, प्लीज़ इनसे आप थोड़ा सा बच के रहिएगा, बिकॉज वो ना खुद लेते हैं ना आपको कुछ करने देंगे. Absolutely. So I mean, hire a professional mortgage or a professional real estate agent who can guide you, who can educate you throughout जो भी आपका प्रोसेस है उसके थ्रू. Yes. अच्छा मैंने ये बताइए, रेट्स बहुत नीचे है, मेरी मॉर्गेज ज़रा हायर रेट है, सो आई वुड लाइक टू गेट द बेनिफिट ऑफ दैट लोअर मॉर्गेज रेट्स. Absolutely. अगर उसमें क्या फिर मुझे मैं रीफाइनेंस अगर करवाना, वो भी आप करती हैं? Yes, absolutely. That's again another good question. Some people, when they close their house, they're a little shortage of money. Say they bought the house for 500,000, they were qualifying only for 400,000. Okay, because they had 100,000 in down payment, and whatever the reason, they were sure of 100,000. So at that time, they had a bundle option, which is for 100,000 they went to private lender. Private lender probably charging them 10% and just the principal. They may be paying $1,000 or $2,000 or whatever the amount they're paying. Okay, they have a mortgage and B mortgage, means first and second mortgage. Second mortgage. Now you have a couple of years, you have a better options. आपकी equity gone build up in your house. Your income probably has increased, or you have rented your house, the basement has been rented. You may have a better situations. So we can pay those off, which is a second mortgage and the first mortgage, and can get you, could be B lender, could be A lender. Even if it's a B lender, the rates will be 2.9, between 2.9 to 3.5, even if it's a B lender. This is much better than you're paying to private lender, which is 10%. Why make him rich? Why you're making somebody else payments? Just do your own math. Get your house refinanced. Take some money out, pay them off, have a mortgage on a lowest. लेकिन रीफाइनेंस में जब रीफाइनेंस कराते हैं, जो आपके जो कुछ अगर डेट्स हैं, तो those debts I mean have to be pay paid them off. Yes, every single that has to be paid तो off. कितना परसेंट है? सपोजिंग आई हैव अ प्रॉपर्टी, ठीक है जी, उसकी अब सपोजिंग $1 million उसकी प्राइस हो गई, and I've built up equity worth of $800,000, supposing, just for argument's sake. तो उसको अगर मैं उसमें से equity निकलवाना चाहूँ, you want to take some equity out of that property, so what percentage I can? Some lenders go up to 80% loan to value. Loan to value. The easiest way to 75%, but some B lenders, they do go up to 80% loan to value, and I have done in the past 80% loan to value. There's not a problem as long as you're qualifying for that 80%. Your income is supporting, your credit score is good. All those situations, it depend upon scenario to scenario. You can't say for everybody, but whoever have this situation, of course, you should go on a lower interest rate. Pay your debts, pay your B lenders, pay your private lenders, whatever you want to pay it off, and have a lowest interest rate mortgage. Okay. और that is a good dear viewers, जैसे आपने अभी देखा और सुना कि नीलम ने जो बात की है, it's very very important, और बड़ी एक अच्छी बात है जिससे कि आप बेनिफिट हासिल कर सकते हैं. आप कॉल कीजिए, कोई भी आपको मॉर्गेज के बारे में कोई आपको क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरी है आपकी, आप रीजनल स्टूडियो को कॉल कीजिए, और आपका नंबर है 647-739-8710. और आप काम कर रही हैं सेंटम इंडिगो मॉर्गेज के साथ. तो आप ऑफिस अपने जो क्लाइंट्स आते हैं, जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं,
उनको आप यू कॉल देम इनवाइट देम ओवर टू ऑफिस, और यू अब तो खैर वर्क फ्रॉम होम हो रहा है तो पीपल you can do get things done online these days. So how do you work? Either way, if somebody wants to come see me in my office, by all means. So we do take an appointment, and just appointment basis only. And if client wants me to see them, I do go and see them personally, or if we have to get all the paperwork through the system, which is a computer, done. So it's very easy. It's very easy. Either way. Things जब से ये online situation, the things have become Yes. quite easy and easier rather. अब तो बड़ी convenient हो गई है बहुत ज़्यादा. आपके अपॉइंटमेंट लें, आप ऑफिस जाएं, बिलें, तो you can do everything online over the phone and through email and all that. So that's very nice. So कि आप मुझे बताइए, आप तो जैसे आप रियल एस्टेट में हैं, तो आप कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हैं या कोई आपकी अपनी पर्सनल लिस्टिंग्स would like to share with us? Yes, with our viewers? I'll like to tell my viewers that I have a property. मेरे पास एक घर है जो कि ब्रैम्पटन में माउंट प्लेजेंट एरिया में है. मेजर इंटरसेक्शन इज मिसिसागा रोड एंड बोवेर. ये टाउन हाउस है, बट इट्स वेरी बिग टाउन हाउस. फॉर अ टाउन हाउस इट्स 2-car garage, 2100 square feet. 4 bedroom, 3 full bathrooms in the townhouse. So I mean, good price. अगर आप इस घर को देखना चाहते हैं, और अगर आपको more information चाहिए, you can give me a call at 647-408-7066. एक another मेरी property जो मैं share करना चाहूँगी वो मिल्टन में है. It's a bungalow, but it's big land. 6 acre की land पर 3 bedroom का bungalow है. Okay. And इसकी basement finished है with 1 bedroom and 1 bathroom. Walkout basement है. It's a very beautiful property. Like I said, 6 acre की land पर 3 bedroom का bungalow है. बहुत ही अच्छा है. आपने देखना है, मुझे फ़ोन कीजिए. 647-408-7066 is my number. One more time, 647-408-7066. Thank you very much, Neelam. आपने सुखी, and thank you very much, Neelam. आप हमारे studios में आए. You've taken time Thank you for having us. your busy Yes. schedule. And thank you for coming. So, dear friends and viewers, जैसे कि आपने सुना कि बताया, सुखी ने भी रियल एस्टेट के बारे में बताया, नीलन ने भी मॉर्गेजेस के बारे में बताया. तो आपको now you have these two professionals, you have their contact numbers. आपको कोई इनके फर्दर डिटेल्स चाहिए, आप नंबर नोट नहीं किया, आप मुझे कॉल कीजिए at 416-570-1228. हमारे स्टूडियो कॉल कर सकते हैं आप 905-470-4114. तो आई होप कि काफ़ी कुछ आपको मालूम पड़ा होगा, आपकी इन्फॉर्मेशन में कुछ थोड़ा बहुत इजाफा हुआ होगा, नॉलेज में. यही है हमारा पर्पस, यही है इस प्रोग्राम का, इज़ टू एजुकेट यू. आपको बताया जाए, कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं, कोई आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉल अस एंड वी आर हियर. इस प्रोग्राम के थ्रू हम आपको उन सवालों के जवाब जो है वी गोना आंसर योर क्वेश्चंस थ्रू आवर प्रोग्राम. सो आई होप आपने एंजॉय किया होगा रियल्टर्स कैफे विद असफर ताहिर. असफर ताहिर को इजाज़त दीजिए एंड कीप वॉचिंग रियल्टर्स कैफे. थैंक यू एंड बाय बाय. जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी. मुस्लिम वेलफेयर सेंटर के जरिए आप पाकिस्तान के रेगिस्तान में प्यासों को पानी पिला सकते हैं, गरीब बच्चों की तालीम और माली परवरिश कर सकते हैं, बीमारों का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं. ज़कात, सदक़ात या फिदिया देने के लिए आज ही हमें फ़ोन करें 1-866-754-3111. A harsh but true reality is that clean drinking water is inaccessible to many people living in third world countries. With the support of our donors, Muslim Welfare Canada has been successful in providing clean water through the digging of water wells and the installation of hand pumps for people living in remote and desert regions. Donate a well or a hand pump, call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org. Muslim Welfare Canada has made a concerted effort to lead the fight against child labor, poverty, and illiteracy in third world countries through the generous support of our donors.
Both girls and boys receive free, good quality education. Help educate a needy child for just $1 a day or $30 per month. Donate generously. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org. Since 1993, MWC Food Banks have provided individuals and families with non-perishable food, halal meat, and essential household items. We have a special focus on the needs of our children. Over 10,000 families across Canada rely on MWC Food Banks to supplement their food requirements. We serve in Scarborough, Mississauga, and in First Nations communities in Ontario, Northwest Territories, and Nunavut. Your generosity can literally change lives. It's time now, more than ever, to look after your neighbor. Charity starts at home. Please donate generously to Muslim Welfare Canada Emergency COVID-19 Food Fund. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.